friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. In our 15-minute series of Geography and Environment, we're gonna discuss an important article which is related to Simli-Pal National Park. If we talk about this article, this park was in news because there was a forest fire. There was a forest fire in this particular park, and the Hindu में plus आपके कहीं ना कहीं down to earth में there was one article about this particular national park. Let's see what are the important things we should know. First, the name Simli-Pal comes from a tree known as Simul. Simul tree is found in this area, this particular national park, and it is also known as silk cotton. And because of this silk cotton, इसका नाम क्या पड़ गया? Simli-Pal. And it is found in उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये आपको नेशनल पार्क मिलता है. अगर हम बात करें ये नेशनल पार्क क्या है, बेसिकली ये नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है. अगर हम बात करें ये नेशनल पार्क एक एलिफेंट रिजर्व भी है. इट इज अ टाइगर रिजर्व, ऑल्सो अ एलिफेंट रिजर्व. अगर हम बात करें, दिस नेशनल पार्क वॉज गिवन अ बायोस्फीयर status in 1994, and whereas it was added in UNESCO Biosphere Reserve Program in 2009. अगर हम बात करें what all area this Simli-Pal Tiger Reserve includes, तो basically it includes Simli-Pal Tiger Reserve plus Hathgad Wildlife Sanctuary and Kuldiya Wildlife Sanctuary. These are the three area which are included in this biosphere reserve. As I told you, it is also an elephant reserve, और इसे अक्सर कह देते हैं also known as मयूरभंज elephant reserve. मयूरभंज elephant reserve. As I told you, यूनेस्को की जो बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में it was added in 2009, and it is situated in ईस्टर्न घाट के ईस्टर्न एंड में. ऑलमोस्ट अगर आप इसका मैप देखेंगे, as I have done this is the area of Eastern Ghat, and it is particularly on the tip of Eastern Ghat towards the east side. अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल की और झारखंड बॉर्डर के पास पड़ता है और ईस्टर्न घाट के बिल्कुल एंड पे पड़ता है. अगर हम बात करें, साल इज द डोमिनेटेड स्पीशीज ऑफ ट्री फाउंड इन दिस एरिया. साल जो ट्री है सबसे ज़्यादा वही मिलता है इस एरिया में. एंड एनिमल्स लाइक आपके बंगाल टाइगर, योर एशियन एलिफेंट, इवन योर गौर, चौसिंगा आर फाउंड इन दिस particular biosphere reserve. If we talk about generally why this area catches fire so frequently, because there are deciduous tree. यहाँ पर कौन से ट्री मिलते हैं? डेसिडुअस ट्री. एज यू पीपल नो, ईस्टर्न घाट वाली साइड दिस एरिया रिसीव lesser amount of rainfall, and that's why deciduous tree are found in this area. अगर हम बात करें, deciduous tree will shed their leaf, and वो पर्टिकुलरली कब होता है? ऑनसेट ऑफ समर और एंड ऑफ ऑटम में. एंड फ्रिक्वेंटली वी सी द फायर ड्यूरिंग दिस पीरियड. अगर हम बात करें तो as I have written over here that it coincide with shedding of leaf which make it vulnerable to the fire, because इस duration में temperature is very high and the leaves, the dry leaves catches fire easily. It can be a natural thing or it can be a man-made cause, because people will go over there. Those who smoke can throw a burning smoke stick over there, that can cause a forest fire. तो ये तो बात हो गई इसके बारे में. But there are two particularly vulnerable tribes found in this area. One is known as Khadiya and Mankadiya. अब खादिया एंड मनकादिया basically they depend upon honey collection is their prime business, and because of these forest fire इनकी कहीं ना कहीं सर्वाइवल पे क्वेश्चन उठ जाता है. बिकॉज बी जो है they survive in a temperature range of 25 to 35 degrees Celsius, but during summer or due to fire this temperature exceeds 40 degrees Celsius, and hence bee are not present in this area, and because of which beekeeping goes for a toss. कहीं ना कहीं बी कीपिंग नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से हनी कलेक्शन थोड़ा डिप कर जाता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिप कर जाता है. एंड दीज टू पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब डिपेंड्स अपॉन, मोस्टली डिपेंड अपॉन किसके ऊपर? हनी कलेक्शन के ऊपर. सो दैट्स वाई डाउन टू अर्थ में इसके ऊपर पूरा आर्टिकल था दैट दे
will not be able to survive because कहीं ना कहीं जो एक particular vulnerable group है, they won't be able to collect honey. So these two particularly vulnerable group are tribal group are important. First thing, and the location of the park and kind of flora fauna found in here, they are very important and hence you should read about this. And आज की वीडियो में इतना ही. I will meet you in the next session जो कि हमारा अगले मंडे को होगा. And I hope you enjoy this session. Like, share and comment on my video. Thank you very much.